See you. स्वागत है आप सभी का शून्य और आई नो फर्स्ट के इस जॉइंट वेबिनार में, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगले हफ्ते के स्टॉक्स को हम किस तरह से एक देख पाए कि किस तरह से अगले हफ्ते का मार्केट रह सकता है और एआई किस तरह से हमारी मदद कर सकता है। किस तरह से हम अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को एआई की हेल्प से और ज़्यादा आगे लेके जा सकते हैं और किस तरह से एआई ने पास्ट में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। सो काफ़ी चीज़ों पर चर्चाएं होंगी। आई नो फर्स्ट से मिस्टर यारोन एंड मिस्टर बेन हमारे साथ हैं, जो कि आई नो फर्स्ट एक एआई बेस्ड स्टॉक प्रोडिक्शन प्लेटफॉर्म है, जहां पर पास्ट डेटा का यूज़ करके हमें ये बताया जाता है कि आने वाले समय में मार्केट की या स्टॉक्स की क्या चाल हो सकती है। कौन से स्टॉक्स ऐसे हो सकते हैं जिनमें हमें अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है, या कौन से स्टॉक ऐसे होंगे जिनमें आने वाले समय में कुछ मंदी देखी जा सकती है। सो एआई हमारी काफ़ी चीज़ों में मदद करेगा। हमें स्टॉक्स फाइंड आउट करके देगा, उसके ऊपर हमें अपनी रिसर्च लगानी है, अपने एनालिसिस करने हैं कि हम किस तरह से, हमारा क्या नज़रिया है। तो हमारी कहीं ना कहीं स्टॉक फाइंड आउट करने में मदद कर सकता है, पर एट द एंड जो भी डिसीजन मेकिंग होगी वो हमारी खुद की होगी कि हमने किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, या जो भी हम करना चाहते हैं वो किस तरह के स्टॉक्स में होगा। So over to you, Ben and Yaron sir. Please, you can share your screen and then we can start. Okay. No problem. Thank you, Kashav. And it's great to see you again. And we have a really special webinar today. We're going to talk about the Indian market. We're going to talk about and see the algorithm, predict the algorithm, the Indian stocks. We also have prizes for the crowd today. And to the end of this webinar, we're going to show the forecast for the future. Stay tuned. And let's start by first a quick disclaimer that I know First Daily Market Forecast does not provide personal investment or financial advice to individuals or act as a personal financial, legal, or institutional investment advisor or individual advocate to purchase or selling of the security or investment of the investing stock forecast and investment strategies include the risk of loss or some of or even all of your capital. Before pursuing only financial strategies discussed on this webinar, you should always consult with a licensed financial advisor. That's a quick disclaimer just for you to know, and let us start with the webinar. Share my screen. Before I'm bringing the mic to Yaron, just a quick note. If you have any questions during the webinar, please feel free to ask us through the Q&A option you have in your Zoom. So do not use the chat, please use the Q&A, and we'll try to answer all of your questions. So we're ready to begin, Yaron? Yes, we are ready to begin. Okay, Yeah. so we will start with a quick overview of I know first the technology, the team. This webinar is very unique today because we're going to have multiple examples from the market, and my goal and our goal for this webinar is to teach you how you can use and utilize the AI technology in order to identify investment opportunities on a daily basis in the Indian market. So during this webinar, we're going to give you several tips
how to utilize the different indicator that the AI algorithm is generating and how you can use it on a daily basis in the NSC and the BSC markets. So I know first is an AI fintech company. Our main solution is a predictive algorithm that generate daily forecast and identifies on a daily basis the most promising investment opportunities. We are utilizing artificial intelligence, more specifically deep learning, artificial neural network, genetic algorithms to predict the financial markets. Our predictive algorithm is generating daily forecasts for over 13,500 assets from different asset classes, equities, ETFs, commodities, currencies, indices, cryptocurrencies, with daily forecasts for multiple timeframes, short-term, mid-term, and also long-term. This is a global solution. We are covering over 50 global stock exchanges, including the stock exchanges in the US, Europe, but specifically the 2 stock exchanges in India. Our predictive algorithm is generating daily forecasts for over 1,500 scripts from the Indian markets, as well as different indices from the Indian markets. ओके सो ये जो वेबिनार है ये दोनों ही लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश एंड हिंदी। तो थोड़ा मैं आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। सो आइनोफर्स्ट जो है एक एआई प्रोडिक्शन करने वाली कंपनी है, जो कि फिनटेक कंपनी है और मार्केट में पिछले कई सालों से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। पहले ये लोग अपनी सर्विसेज जो थी वो ग्लोबल मार्केट में प्रोवाइड कराते थे, सिर्फ ओवरसीज मार्केट में, इंडियन मार्केट्स के लिए अवेलेबल नहीं थे। बट अब की अगर हम बात करें तो आइनोफर्स्ट जो है इंडियन मार्केट में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और आने वाले टाइम पर बाजार का क्या मूव हो सकता है, बाजार किस तरह की चाल दिखा सकता है, उसके ऊपर एआई की हेल्प से हमें सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। सो अगर हम बात करें तो हम एक ऐसे बाजार में हैं, एक जनरल डिस्क्लेमर जहाँ पर दिया जाता है कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। सो यहाँ पर हमें जो भी हम इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी प्रोडक्ट को चूज कर रहे हैं, किसी भी स्टॉक को चूज कर रहे हैं, चाहे वो आपको एआई ने ही क्यों ना सजेस्ट किया हो, और इट्स अवर ड्यूटी कि उस स्टॉक को हम एक बार खुद अच्छे से चेक करें। सो कि वो शेयर जो है जिसमें ट्रेड कर रहे हैं या जिसमें हम अपना पैसा निवेश करने वाले हैं, क्या उसके अंदर हमें आने वाले टाइम पर पोटेंशियल दिखाई देता है या फिर नहीं दिखाई देता है। सो आइनोफर्स्ट अगर हम बात करें तो डेली फोरकास्ट देता है 13,500 से ज़्यादा एसेट क्लासेस पर, जिसमें स्टॉक्स, ETFs, कमोडिटीज, करेंसीज, इंडाइसेस सभी इन्वॉल्व होते हैं लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए। और ये जो फोरकास्ट हैं ये ग्लोबल मार्केट्स के लिए अवेलेबल होती हैं। जितनी भी कंट्रीज, जो भी मेजर कंट्रीज, मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड स्टॉक्स हैं, उनके ऊपर एशिया के बाज़ारों में, यूरोप के बाज़ारों में, जापान के बाज़ारों में, हर जगह पर आपको आइनोफर्स्ट की प्रेडिक्शंस देखने को मिलती हैं। Over to you, Yaron sir. Thank you. And if we're jumping directly to the market, we can see here an example from the market. Ben, you want to tell us what do we see here? Yes, we are seeing the forecast of a small cap companies that was generated on May 12th, as we can see here. And those are the 7 companies that the algorithm suggested to hold and to buy and hold for a period of 2 weeks. And to the right, we can see the performance of those companies. We can find here the returns. For example, the first company that we see here, Remos Sonfid,
I think, which belongs to the auto industry, and actually works with Tata Motors and Suzuki, and it actually made 22% in the last 2 weeks. We can see the company that called the SEJALLTD, that actually made the 18%. And we can see the performance of each and every company here to the right. In the bottom of this forecast, we can see the First average, the average of those stocks, and compared to the benchmark that we see here that made in the same period 3.43%. Yes, and we can see very nice returns here, specifically in the short period of 3 days. So this is just an example from the small cap universe. A similar, on a daily basis, when you're logging into the platform, you will be able to see the fresh forecast with the best opportunities for the different timeframes. We are going to talk about it in this webinar, basically. अगर हम आज के वेबिनार की बात करें तो आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिखाना चाहेंगे जो कि एआई ने आपके लिए प्रेडिक्ट किए थे, कुछ शेयर्स, और उनके क्या रिजल्ट्स रहे। तो एक आज से 14 डेज पहले की अगर हम बात करें तो 12th ऑफ मई को जो स्टॉक सजेस्ट किए गए थे एआई से, उन स्टॉक्स के रिजल्ट्स कुछ इस तरह से रहे कि रैमसन इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक था उसने 2 हफ्तों में 22% के रिटर्न दिए। फिर सेजल लिमिटेड का स्टॉक था, उसने 18% के रिटर्न दिए। इसी तरह से जो हम बात करें तो टोटल जो स्टॉक्स थे उसमें हमें 6% से लेकर 22% तक के रिटर्न जो है वो दिखाई दिए हैं। अगर इसी बीच के हम बाजार की भी बात करें तो मार्केट ने कुछ 3% का रिटर्न दिया है और आईकेएफ की जो एवरेज आ रही है वो 9% की आ रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरह ये बाजार को या फिर इंडाइसेस को किस तरह से बीट करता है, और हमेशा दुगने से तिगने रिटर्न्स हमें 2 से 3 गुना रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं आईनो फर्स्ट के सजेस्ट किए हुए स्टॉक्स के थ्रू। Okay. So in this webinar, we're going to see multiple examples, so don't worry. All the examples are past examples. Don't take it as an investment advice. In order to get the most updated opportunities, you need to log in today to the Shunia platform. Just take your phone, log into the platform, subscribe, and then you will see the most updated opportunities for the upcoming days. Best stocks from the NSE, BSE, and also best indices. We would like to introduce the INO-FIRST team. The INO-FIRST predictive algorithm was developed by our R&D team that being led by Dr. Lipa Roitman, one of the leading experts in the field of artificial intelligence, machine learning, with over 20 years of experience in research and development. Dr. Roitman received his PhD from the Weizmann Institute of Science in Israel. And Dr. Roitman is leading our R&D team that includes PhDs, data scientists, AI and machine learning experts. We have math professor from Tel Aviv University, as well as employees with a background of data science, math, statistics, and also IDF veterans, specifically from the intelligence units. Ben is our head of advisory. He used to work for the largest bank in Israel before joining to INO-FIRST. My name is Yaron Golger. I'm the CEO and the co-founder of INO-FIRST. I'm also lecturing at one of the leading universities in Israel in the field of fintech and AI. I'm an engineer with an MBA.
The INO-first predictive algorithm is being trusted by the world's leading hedge funds, investment houses, banks, family office, brokerage firms, as well as retail clients from all over the world that utilizing our predictive algorithm in order to identify opportunities in the market. In this list, you can find leading banks, investment houses, hedge funds, and also brokerage firms. With some of the investment houses that appear here, we have also built different investment products that utilizing our technology. Mutual funds that relying on the INO first AI technology. Please, Keshav. सो अगर आइनो फर्स्ट की बात करें तो आइनो फर्स्ट जैसा मैंने आपको बताया एआई बेस्ड स्टॉक प्रोडिक्शन टूल है। तो एआई को किसी ने बनाया है। सो अब एआई को बनाया गया है डॉक्टर लीपा रॉटमान, जो कि एक साइंटिस्ट हैं और को फाउंडर हैं इस आइनो फर्स्ट टीम के। और अगर हम बात कर रहे हैं मिस्टर यारोन हमारे साथ हैं, जो कि यहाँ इस इंडस्ट्री में फिनटेक इंडस्ट्री में काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं और ये चेयरमैन भी हैं इजराइल एक्सपोर्ट इंस्टीट्यूट फिनटेक बोर्ड के। साथ ही फिनटेक लेक्चरर हैं ये रिचमैन यूनिवर्सिटी आईडीसी इजराइल में। इन्होंने एमबीए किया हुआ है और साथ ही ये काफ़ी सालों से एआई के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और इस फिनटेक इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा एआई लेकर आए हैं जो कि वर्ल्ड में हर एक्सचेंज के ऊपर अपने रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। ये एक ऐसी यूनिक कंपनी है जो कि आपको मतलब आपने एआई बेस्ड हर जगह बहुत सारी जगह सुना होगा कि एआई आपको हेल्प करके देगा, हम एआई से इन्वेस्टमेंट करवाते हैं या डिफरेंट डिफरेंट आपको ऑफर्स देखने को मिलती हैं। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एआई आपको स्टॉक सिलेक्ट करके देता है कि ये स्टॉक्स मुझे लग रहे हैं जिसमें आने वाले टाइम पे ऊपर की साइड या नीचे की साइड मूवमेंट आ सकती है। एक बार आप अपने हिसाब से चेक कर लो, अगर आपको ठीक लगता है तो आप उसके अंदर अपनी पोजीशन ले सकते हो। वेरी क्लियर है ना। तो एआई आपकी हेल्प करेगा कि आपको ये पता लग जाए कि कौन से शेयर्स हैं जो ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अब वो जाएगा नहीं जाएगा ये तो मार्केट की अपनी ट्रेजेक्टरी है, पर लेकिन हाँ, जिन स्टॉक्स के सिग्नल्स अच्छे हैं, प्रेडिक्टिबिलिटी अच्छी है, जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में देखने को मिल रहे हैं, ऐसे शेयर्स हमेशा एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। सो लेट सी कि आज कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हम देखते हैं जो कि पिछले टाइम पर एआई ने हमें सजेस्ट किए थे और अब उनके रिजल्ट्स क्या निकल कर आए हैं। हमारे साथ बैन भी हैं जो कि हेड ऑफ एडवाइजरी हैं आइनो फर्स्ट टीम के, और ये कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं जो कि इनकी भी काफ़ी हेल्प से ये मॉडल या फिर ये प्लेटफॉर्म बन के आया है जो कि हमारी हेल्प करता है स्टॉक फाइंड आउट कर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज हरियाणा सर। सो अगर हम बात करें क्लाइंट्स की तो नेशनल बैंक ऑफ कनाडा, बैंक ऑफ अमेरिका, फिनवेशिया, सी कैपिटल, टोटल कैपिटल, मिताओ, ये ऐसी कुछ रिनोड फर्म्स हैं जो कि फिनवेशिया जो कि आइनो फर्स्ट से अपनी सर्विसेज ले रहे हैं। इसके अलावा कई सारे बड़े फंड हाउसेस, फैमिली ऑफिसर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, काफ़ी लोगों की ऐसी टीम है जो कि आइनो फर्स्ट का यूज़ करके अपने क्लाइंट्स को एक अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओवर टू यू ज्ञान सर। Thank you very much. The solution that you're about to see and also use and experience has received several international awards, including from the Geneva Wealth Tech Forum, from UBS, and also from Entity Data in Japan. Yeah, here you can see several photos from those events. And also events that took place in India. So what do we do?
we are providing to our clients two main solutions. On one hand, it's possible to use the AI algorithm as a retail client or institutional client in order to identify the best opportunities from the Indian market. On a daily basis, the algorithm is scanning the entire Indian market, identifying the opportunities, and you guys are going to receive the bottom line out of this process with the best opportunities for the short term, mid-term, and also long-term. On top of that, specifically for institutional, we are also, with institutionals, we're developing AI-powered investment products that are relying on our technology. We have launched already ETF, mutual funds that are utilizing our technology. And we are working on additional products that taking advantage of our technology, AI technology, in order to build a portfolio and to manage it on a monthly basis, basically. यस सो हम डिस्कस कर रहे हैं जब आइनो फर्स्ट के बारे में, तो इससे कहाँ का मतलब अगर किसी भी चीज़ का हमें पता लगाना है तो हम यही चीज़ देखते हैं कि इसके क्या रिव्यूज़ हैं, क्या अवार्ड्स हैं, क्या क्या मिला हुआ है, तो उसी पे थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। तो आइनो फर्स्ट एक जो है इज़ अ वर्ल्ड टेक 100 कंपनी, मतलब दुनिया की टेक की जो 100 कंपनी है उसमें आती हैं, और साथ ही आइनो फर्स्ट फिनटेक इंडस्ट्री का एक बहुत ही रिनोन नेम है, और इसे बहुत से अवार्ड्स ऐसे मिले हैं अपनी रिसर्च के लिए। सो आप यहाँ देख सकते हैं fintech.il से भी अवार्ड है आइनो फर्स्ट को। फिनटेक टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट कंपटीशन 2023 में फिनटेक अवार्ड मिला है बेंजिंगा से, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिनटेक फोरम है। इसके बाद जिनीवा वेल्थ टेक अवार्ड 2019 में ये विनर रहे हैं। एंटिटी डाटा से ओपन इनोवेशन इन्होंने अवार्ड जीता है 2017 में। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कुछ स्टेजेस हैं जहां पर आइनो फर्स्ट ने अपनी कैपेबिलिटीज से कुछ मुकाम हासिल किए हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया में भी कहाँ पीछे रहना था। इंडिया फिनटेक फोरम से आइनो फर्स्ट को कॉन्ग्रेचुलेट किया हुआ है, अवार्ड दिया हुआ है, क्योंकि इन्होंने एक अपनी जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं एआई की, वो शोकेस की थी इंडियन मार्केट में 2018 के अंदर। नेक्स्ट यस। सो अब बात आती है आइनो फर्स्ट एग्जैक्टली करता क्या है। तो आइनो फर्स्ट जो है वो एआई बेस्ड प्रेडिक्शन सिग्नल्स प्रोवाइड करता है रिटेल और इंस्टीट्यूशंस क्लाइंट के लिए। सो अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशंस क्लाइंट की, तो अगर इंस्टीट्यूशन क्लाइंट्स का अगर बेंचमार्क हम देखें तो आपको देखने को मिलेगा S&P ने 73% के रिटर्न दिए, वहीं पर आइनो फर्स्ट ने 227% के रिटर्न दिए, और मतलब आइनो फर्स्ट की जो परफॉर्मेंस है वो 150% से ज़्यादा तेज है। नेक्स्ट स्लाइड यार प्लीज। Dino first predictive algorithm includes three main components. All of those components are available to Shunya users. All you need to do is to use the link that I paste in the chat, and then you have access to all those three components. And I'm going to talk about those components in the next slide. And also Ben is going to talk about it in his slides. So the first component is the most interesting one. This component is allowing you to identify the most promising investment opportunities from the NSE or the BSE across different universes. Small caps, mid caps, and also large cap. On a daily basis, you can identify the best opportunities from those universes. On top of that, the second component is providing you stock market intelligence. By using it, you can identify leading sectors within the Indian market.
leading indices, and also sectors and indices that you should basically avoid. And the last component is providing you a customized forecast based on each client portfolio. So basically, you can track your current holdings and you can get AI-powered forecast for your existing portfolio, basically. And by utilizing all those three components, you can identify opportunities on one end, and on the other end, replace and rebalance your existing portfolio with the best opportunities that the AI is suggesting on a daily basis. सो आयनो फर्स्ट की जो प्रेडिक्टिव एल्गोरिथम्स हैं ये किस तरह से काम करती हैं, तो सबसे पहले ये मोस्ट प्रोमिसिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे स्टॉक्स जो कि आने वाले टाइम पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं कि हाँ उनके सिग्नल्स सही हैं और ये इनमें अच्छी वॉल्यूम्स आ रही हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर ये लोग एनालाइज करते हैं। वॉल्यूम्स हो गया, ट्रेंड हो गए, उसके बाद डिलीवरेबल डेटा हो गया। बट अभी एज अ ह्यूमन बीइंग मैं कितने शेयर्स देख सकता हूँ एक दिन में? 50-100, है ना? मेरी अपनी लिमिटेशंस है, बट एआई की कोई लिमिटेशन नहीं है। एआई एक दिन में 1500 से ज्यादा स्टॉक्स एनालाइज करता है सिर्फ इंडियन मार्केट में। अगर ओवरऑल बात करूं तो 13,500 से ज्यादा स्टॉक्स, ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज करके आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। कमोडिटीज, करेंसीज, पता नहीं क्या क्या। बट अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो 1500 से ज्यादा शेयर्स के ऊपर अपनी प्रेडिक्शन देता है कि ये स्टॉक्स हैं जो अपसाइड जा सकते हैं, ये शेयर्स हैं जो नीचे की तरफ जा सकते हो। डेली ये काम होता है ना? ऐसा नहीं है कि आज बता दिया अब एक हफ्ते बाद काम करेगा। डेली बेसिस पे करता है। मिनिमम 3 दिन से लेके 1 साल तक की प्रेडिक्शन देता है। इंट्राडे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि कम से कम जो इनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइकिल है वो 3 डेज का है, ठीक है। और हायर साइड पे अगर हम बात करें तो 1 साल तक की प्रेडिक्शंस फिलहाल ये प्रोवाइड कराते हैं। कुछ यहाँ पर मैंने देखा कुछ लोग जो है अपने क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं। सो आप Q&A में अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं जिन्हें हम एक साथ एड्रेस कर लेंगे। पर जो कॉमन क्वेश्चंस है कि इंट्राडे में यूज हो सकता है, नहीं, ये इंट्राडे में यूज नहीं हो सकता है। दूसरा ये एफओ के लिए है, तो एफएनओ एग्जैक्टली अभी स्टॉक बेसिस पर नहीं बताता है, तो मेनली फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। ऑप्शंस को तो ये नहीं बताता है फिलहाल। बट अगर बात करूँ मैं इंडेक्स की, तो आप इंडाइसेस जरूर चेक कर सकते हैं यहाँ पे, और उसमें आपको ये अपने प्रेडिक्शंस बता देता है कि कौन सा इंडेक्स है वो अपसाइड या डाउनसाइड जा सकता है किस टाइम फ्रेम में। सो जैसे मैंने बताया कि सबसे मोस्ट प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, उसके बाद अपने इंटेलिजेंस लगाता है, लीडिंग सेक्टर्स फाइंड आउट करता है, इंडाइसेस देखता है कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें अपसाइड पोटेंशियल आ सकती है, और फिर आपको अपना आपका जो पोर्टफोलियो है, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, वो जो शून्य के अंदर आपने बना के रखा है, उसको भी एनालाइज करता है कि कौन से शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में आने वाले टाइम पे अप ट्रेंड दिखाएंगे, कौन से शेयर्स डाउन ट्रेंड दिखाएंगे। इस चीज को पहले ही प्रेडिक्ट करके आपको एआई बता देता है। ओवर टू यू यार सर। Thank you. So how we do it? Our predictive algorithm is collecting quantitative data that coming from the entire financial market. We are utilizing the extensive amount of data sets, huge amount of data set that is very difficult to a human trader to analyze on a daily basis. We are adding the daily data to our stock database. We are managing database with historical data. And around the clock, the algorithm is always learning from the new data that coming all the time from the financial markets, and learning also from the historical data, and also from the combined data. In terms of the data, I see a lot of questions about the data that we are utilizing. We are utilizing data that coming from over 50 global stock exchanges, the Indian market, but not only the Indian market, data that coming from the US markets, European markets, and other markets around the globe. We are utilizing data that coming from the commodities
commodities market, currencies market, and interest rate environment. All this data is being added on a daily basis to our database, and the AI is basically building the complex network that exists in the financial markets. There are thousands of correlation sets in the market, and the algorithm is able to model those correlation sets without any human intervention. And before each trading day, the AI algorithm is generating the most updated forecast with the best opportunities for the short term, for the midterm, and also for the long term. Here you can see the different time frames that our algorithm is predicting on a daily basis, from 3 days to 7 days, 14 days, 1 month, 3 months, and also 1 year. You basically receiving the bottom line of this forecast, the best opportunities on a daily basis, basically. यस सो बात आती है कि आई नो फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्ट प्रॉमिसिंग एसेट्स जो होते हैं उन्हें फाइंड आउट करता है और फिर आपको उसके ऊपर प्रोडिक्शंस देता है। तो ये होता कैसे सारी चीज़ें? तो सबसे पहले ये लोग डेटा कलेक्ट करते हैं अपने फाइनेंशियल डेटा वेंडर्स से। 15 साल के डाटाबेस को ये लोग एनालाइज करते हैं। हर रोज पिछले 15 साल तक के डेटा को एनालाइज किया जाता है। जिस स्टॉक का डेटा अवेलेबल नहीं है, तो जितना ज्यादा अवेलेबल है, चाहे किसी का साल भर का है, 2 साल का है, 5 साल का है, उतने हर दिन के डेटा को एनालाइज किया जाता है। हर एक पैटर्न को निकाला जाता है, किस पैटर्न के आने से बाजार ने कैसा मूव दिखाया था, 15 साल तक की हिस्ट्री उस स्टॉक की क्या बोलती है, उस हर एक चीज को एनालाइज किया जाता है 15 साल के डेटाबेस को। उसको एक लर्निंग एंड प्रिडिक्शन साइकिल में डाला जाता है। लर्निंग एंड प्रिडिक्शन साइकिल इसलिए क्योंकि हो सकता है कल के दिन किसी स्टॉक के ऊपर आईएनओ फर्स्ट की प्रिडिक्शन आई हो कि ये शेयर जो है वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो लर्निंग है उसकी, वो खुद से सीखता है, ऑटो लर्निंग होती है। अगर तो सही गया तो वो उसको बोलेगा कि हाँ मैंने बोला था सही होगा, तो वो हुआ। अगर नहीं हुआ तो वो पता करेगा कि क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे रीजन क्या है। अगर, इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आप कोई भी शेयर इसके अंदर आपको मिलता है, आपने उसके ऊपर अपना एनालिसिस भी करना है। ऐसा नहीं है कि एआई ने बोल दिया ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है, एआई है, भगवान नहीं। बट हमारी जो, हमें हेल्प किस लिए कर रहा है ये, कि हमें ये पता ही नहीं है कि कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, ठीक है। एआई हमें ये बता देगा कि ये शेयर ऊपर जा सकता है। अब हमें भी ये देख लेना है कि क्या ये ऊपर जा सकता है। अगर हमें भी लग रहा है कि हाँ ये ऊपर जा सकता है, तो हम उसके अंदर अपनी पोजीशन ले लेंगे। या फिर हमें लग रहा है कि ये नीचे जा सकता है, अगर वो एफएनओ का स्टॉक है तो हम उसका फ्यूचर सेल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अपनी हमारी अपनी कॉल है कि हमें उसके ऊपर क्या पोजीशन लेनी है, कोई पुट खरीदनी है, क्या करना है, वो हमारी अपनी कॉल होगी। एआई कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करेगा कि ये शेयर खरीद लो। इट इज नॉट फॉर रिकमेंडेशन। ये प्रिडिक्शन कर सकता है कि ये ऊपर जा सकता है, अब जाएगा नहीं जाएगा वो आप चेक कर लेना, ठीक है। तो लर्निंग और प्रिडिक्शन साइकिल में जाता है, रिजल्ट्स जनरेट करता है और एआई पावर्ड प्रिडिक्शंस दिखाता है हमें 3 दिन से लेके 1 साल तक की। 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 1 साल, इस टाइम फ्रेम में हमें स्टॉक्स देखने को मिलते हैं। ओवर टू यू यारन सर। Thank you. In terms of the technology, we are combining different advanced AI technology methods to one predictive algorithm. We are utilizing deep learning, artificial neural networks, genetic algorithm, reinforcement learning, and the goal is basically to separate and to focus on the most predictable assets from the Indian markets. So on a daily basis, the AI algorithm is separating the assets that are not predictable from the Indian market and focusing on the most predictable assets from the BSC and NSE. It's important to highlight that not everything is predictable, not every stock is predictable, but the AI predictive algorithm of I Know First is able to tell us what are the most predictable assets on a daily basis, and we are going to show you in this webinar how you can focus on the most predictable assets on a daily basis. सो अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की,
तो कटिंग एज डीप लर्निंग अप्रोच है, ठीक है। जितनी भी रिसेंट रिसर्च होती है उसको एआई खुद अपने आप को उसमें आगे बढ़ाता है। सेल्फ लर्निंग है, फ्लेक्सिबल है, स्केलेबल है, एडेप्टिव मॉडल है, कैपिटल मार्केट की लर्निंग करता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। जेनेटिक एल्गोरिदम्स का यूज करके सुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। एआई को बताया गया है कि आपने अपने रिजल्ट से खुद ही सीखना है, ठीक है। एक, आप जब भी कोई एआई डेवलप करते हैं तो हम एआई डेवलप करते हुए उसको ये बता देते हैं कि इस तरह से ये काम होगा, अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हो पाया तो तुम्हें खुद सीखना है कि इसके अंदर क्या गलती रह गई है, ठीक है। तो इस तरह की लर्निंग दी जाती है एआई को, और उसके बाद इसको रेगुलेट करके आपके रिजल्ट्स आपके सामने लेके आए जाते हैं। तो कुछ स्टॉक्स जिनका 15 साल या उससे ज्यादा का डेटा है, वहां पर रिसर्च पूरे 15 सालों की होती है। और ऐसे स्टॉक्स जिनका डेटा ही कम है, आपको ये स्टॉक अगर 10 दिन पहले ही लिस्ट हुआ है तो ऑब्वियसली वहां 10 दिन का ही डेटा मिलेगा, तो उन 10 दिनों के हिसाब से उसकी प्रेडिक्शंस की जाती है। लेकिन जो पुराने स्टॉक्स हैं वहां पर हमें एक अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ओवर टू यू। So if we're taking the entire Indian market, we are applying our technology in order to focus on the most predictable assets from the Indian market. Then we are ranking all the Indian stocks and identifying the top stocks on a daily basis for you guys. This is being updated on a daily basis. So every day you need to log in to the platform. You can do it right now, basically, and get the best scripts for today, basically. सो अब बात आती है कि स्टॉक पिकिंग प्रोसेस क्या है एआई की। एआई किस तरह से स्टॉक पिक करता है। तो सबसे पहले इंडियन स्टॉक मार्केट के अपने स्टॉक्स को वो निकालता है। उसके बाद मशीन लर्निंग जेनेटिक एल्गोरिदम का यूज करता है, प्रिडिक्टिबिलिटी फिल्टर लगाता है, सिग्नल फिल्टर लगाता है, और फिर हमें टॉप स्टॉक शो करता है 6 टाइम फ्रेम में। तो प्रिडिक्टिबिलिटी और सिग्नल्स, कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि इसको पढ़ना कैसे है। तो सिग्नल जितना हायर होगा उतने ज़्यादा सिग्नल्स स्ट्रॉन्ग है, और प्रिडिक्टिबिलिटी का जो रेशियो है वो 0 से 1 का है। सो अगर वो 1 के पास है, मतलब अगर आपको कोई स्टॉक दिख रहा है जिसकी प्रिडिक्टिबिलिटी 0.95 बोल लेते हैं, या 0.85 है, या 0.75 है, तो इसको आप ये समझ लीजिए कि 75% चांस है कि जो सिग्नल है वो सही है, या 85% चांस है कि वो सही है। या मतलब इसका एक इससे अंदाजा लगाया जाता है कि अगर सेम सिग्नल आए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 114 सिग्नल है और प्रिडिक्टिबिलिटी है 0.85 की, तो इनका कहना है कि 114 सिग्नल 0.85 की जब 114 सिग्नल आया तो 85% है ना, 0.85 की अगर हम बात करें तो 85% स्टॉक ने अप ट्रेंड का मूव दिखाया है, ठीक है। अगर ऐसे ही हमें डाउन साइड में देखने को मिल रहा है तो डाउन साइड में भी सेम ऐसे ही चलता है। प्रिडिक्टिबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसका ये मतलब है कि पिछले जब पहले रिजल्ट दिखाए गए इस तरह के, तब बाजार में हमारे जो रिजल्ट्स आए वो कुछ इस तरह से थे। तो जितना 1 के पास हो उतने ज्यादा स्टॉक्स आपको देखने हैं। ओवर टू यू। Okay, Okay. Ben, tell us, what do we see here? Yeah, let's try to understand what's the difference between the signal and the predictability and how it looks like. So what we see here is actually the heat map that the algorithm comes in the shape of a heat map. You can see that the green cells represent long position, while the red represent short position. And we are using two indicators to help us to focus on the best stock. One of them is the signal. The signal is the number that we can find in the top of the two numbers here. For example, in Dixon Company, it's 209.52. And the signal represents the predictive movement of the specific asset, or the price deviation for the specific asset. And the signal is our internal index.
and it moves along all the assets that we forecast. And we can see that the strongest signal is located on the top left corner of the heat map and goes down to the right until the negative stocks that we see here that have a negative signals of minus 2.48. And that means that this specific stock is supposed to go down. If the signal is negative, the stock's supposed to go down. If it's positive, the cell will be green and the stock's supposed to go up. And another indicator that we use, and most importantly one, is the predictability indicator. This one we can see in the bottom of each and every square. And the predictability represents how good the algorithm can actually forecast the specific asset. It's in Pearson correlation coefficient, and it moves from -1 to 1. And basically, 0.0 represent 50% probability that the asset will move to the predicted direction. So 1 represent 100% probability. So in both cases, in the predictability and the signal, we will look for highest values, and we suggest giving a little bit more weight to the predictability indicator and focus on the most predictable stocks, as Yaron mentioned earlier. And we're going to see a few examples in the next slides. यस सो जैसा मैंने आपको पहले भी कवर किया कि हम जब बात कर रहे हैं प्रेडिक्टेबिलिटी और सिग्नल्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए कि प्रेडिक्टेबिलिटी और सिग्नल्स को रीड कैसे करना है। तो आई नो फर्स्ट का जो डैशबोर्ड है वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। जो आपको ग्रीन कलर में स्टॉक्स दिख रहे हैं, इसका कहना है कि ये स्टॉक्स में आपको अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिलेगा, और जो आपको रेड कलर के स्टॉक्स दिख रहे हैं उसके अंदर है कि आपको डाउनसाइड पोटेंशियल है, मतलब ये स्टॉक्स आने वाले टाइम में नीचे की तरफ जा सकते हैं, हरे वाले ऊपर की तरफ जाएंगे। सो अब इसके अंदर हमें दो सिग्नल देखने को मिलते हैं, पहला है सिग्नल, दूसरा है प्रेडिक्टेबिलिटी। तो सिग्नल जिसका सबसे ज्यादा है, ठीक है, एक तो हो गया वो शेयर, दूसरा उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी। अब जैसे यहाँ पर 209 का सिग्नल है, मतलब ये जो स्टॉक है इसका सिग्नल सबसे ज्यादा है, पर अगर इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी की बात करें तो इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो 0.49 है। मतलब अगर हम प्रेडिक्टेबिलिटी को 0 से 1 का के पैरामीटर में मानते हैं तो आप देखेंगे कि जो प्रेडिक्टेबिलिटी है वो 0.49 का मतलब है कि 49% ही है कि जब ये सिग्नल मिला तो 49% ये शेयर ऊपर गया। इसलिए मैंने आपसे कहा कि हमें इस्तेमाल तो करना है, लेकिन करना कैसे, उसमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसी लिस्ट में देखें तो नीचे की तरफ हमें एक शेयर दिखाई दे रहा है जिसका नाम है तानला, ठीक है। तो तानला पे ये कह रहा है कि सिग्नल तो मेरे पास 120 के ही है, लेकिन इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी 0.52 है, मतलब जब ये सिग्नल आए तो 52% तो यही हुआ है कि शेयर इसके अकॉर्डिंग ही चला, लेकिन 48 नहीं भी चला है। तो इसलिए हमें ऐसे शेयर्स ढूंढने हैं जिनकी प्रेडिक्टेबिलिटी और सिग्नल सारा कुछ ही ठीक हो, ठीक है। All right, and we see here an example for the forecast. Let's understand what do we see here. And we can see a forecast of the large cap companies that we can see here. We have large cap, mid cap, and small cap. You can choose between the three stock size. And this is a 3 days forecast that was generated not long ago on 28th of May 2025. Sorry, it was generated in 25 of May 2025. And we can see that the performance here to the right are up until the 28th of May for 3 days time period, because the algorithm tells us to hold these stocks for 3 days. And we can see the returns here to the right. Pfizer actually moved 7% in these time frames of 3 days. Tanla Solution, which I know is an interesting stock, moved 7%. And we can see other stock as the SolarWinds that moved 5%, as we can see here.
And the most interesting thing about this specific forecast is actually that the average of this forecast is 2.6%, while the benchmark was negative, minus 0.5% in the same time of 3 days. So Wow. Yeah, this it's is amazing. it's the algorithm can find stocks that are moving against the trend and locate the best stocks with a good performance in a 3 days time period. By the way, another interesting thing about this forecast, we see that the stock with the strongest signals actually delivered the highest return, right? If I'm not wrong Yeah, here. yeah, it's true. It's true. The Pfizer with second one, 116%, 116 signal made 7.05%. And the stocks with the highest predictability level, 0.2, as we can see here, also take the second place of 6.9% in this 3 days period time. And Tanela is actually interesting company. He used to work as a delivering SMS for businesses, and then he got really giant in 5 years, and he has huge contracts with Vodafone, and the algorithm seems to like it in those 3 days time period. And of course, you can skip between the time frames by clicking on those time frames on the top of each and every forecast, and we'll show you how to do it and how it looks like in the platform of Shunya platform in a few slides. very cool. So कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि एआई ने आपको रिकमेंड किए थे, थोड़ा उनके ऊपर देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स रहे हैं। सो 3 डेज की अगर हम बात करें तो फाइजर का जो स्टॉक रहा है उसके अंदर हमें 7% के मूव देखने को मिले। 25 मई को इसने प्रेडिक्ट किया था 3 दिन के लिए फाइजर का स्टॉक, जिसने 7% के मूव दिखाए। तांडला का स्टॉक सजेस्ट किया था जिसने लगभग 7% के मूव दिखाए। सोलार इंडस्ट्री जिसने 5% की तेजी दिखाई, एस्ट्रल जिसने 4% की तेजी दिखाई, मैक्स फाइनेंशियल 2% ऊपर, भारत इलेक्ट्रॉनिक लगभग 0.25% ऊपर, एंड्योरेंस लगभग 1.2% की तेजी। और अगर हम बात करें ट्रेंड, तो ट्रेंड में हमें लगभग 1% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। सो अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं बीएससी का, इन 3 दिन में क्या हाल रहा था बीएससी सेंसेक्स का, तो वहां पर हमें 0.5% की गिरावट देखने को मिली थी और आइनो फर्स्ट में 2.62% के एवरेज रिटर्न दिए थे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है चैट क्यूएनए सेक्शन में कि आइनो फर्स्ट की एवरेज किस तरह से निकाली जाती है। सो आइनो फर्स्ट की एवरेज इस तरह से निकाली जाती है कि जिन स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है उन सभी स्टॉक्स को हम एक एवरेज आउट कर लेते हैं। अगर आपको 8 स्टॉक्स दिखाए गए हैं, 8 स्टॉक्स सजेस्ट किए गए हैं, 10 किए गए हैं, मान लेते हैं 10 स्टॉक सजेस्ट किए, किसी ने 7% रिटर्न दिया, किसी ने 10% दिया, किसी ने 5% दिया, ठीक है, किसी ने 3% दिया, किसी ने 2% दिया। उन सब की उसको कैलकुलेट करके डिवाइडेड बाय 10 कर देते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो आइनो फर्स्ट की एवरेज है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आप सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में 0.5% का डाउन साइड और आइनो फर्स्ट के सजेस्ट किए हुए स्टॉक्स के अंदर आपको लगभग 2.5% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। Yep, and another short-term forecast we can see here. You can see the 4 stocks that appeared here on the 16th of May, of a period of 3 days, and we can see the performance of them right here to the right, with the first one, HSL, moved by 20%, and the average of the forecast stayed on 5.65. This is an interesting small cap forecast. We can see here, this forecast was small cap, the last one was large cap. So you can choose again between the mid cap, large cap, and small cap. And in another time frame of 7 days, we can also see the best stocks to hold for a period of 7 days from 20th May
up until the 27th of May. And again, although the benchmark went down by minus 0.62, the average performance of the package was 2.08, and the algorithm actually succeeded to outperform the market. सो अगर हम बात करें कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स की, तो स्मॉल कैप में भी हमें 3 डेज के टाइम फ्रेम में कुछ स्टॉक्स सजेस्ट किए गए थे, जहां पर HCL इन्फोसिस्टम्स, सुवन लाइफ साइंस और आरती सर्फ और गिनी फिलामेंट्स का शेयर था, जिन्होंने 20% तक की तेजी हमें दिखाई है, आधे परसेंट से 20% की तेजी 16 मई को ये स्टॉक सजेस्ट किए गए थे स्मॉल कैप के लिए। यस, सो 7 दिन के लिए कुछ स्टॉक्स सजेस्ट किए थे, जिसमें हमें सुप्रीम इंडस्ट्री, DLF, कजारिया और सिरामिक्स, लिंडे इंडस्ट्री, तांगला सॉल्यूशंस, APL अपोलो, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर हमें 2% से लगा के तो 9% तक की 9% से ज़्यादा तक की तेजी देखने को मिली है। Okay, another examples for the 7 days time frame, we can see here mid-cap stocks, and we can see the performance that in actually of the 7 days time frame, this stock actually made 28%, while the average of this amazing forecast was around 11.16%. This is very interesting and very good for a 7 days time frame. Again, from the 12th of May, you would get those 8 stocks, sorry, and after buying them, you will see the performance in a 7 days time frame. In the same way, we have it for 14 days. We can see the small cap universe again, companies such as VR, Vertos, which also use AI for services and has a high predictability level, and other companies that we see here that actually outperform the market, and the average was 8.7. And in this, if you like investing for longer time frames of 3 months or even 1 month or 1 year, it's also available. And as long as you go to the highest values of time frames, for example, in the 3 months and the 1 year, we can see that the predictability level is also higher. So that's why we suggest focusing on the longer time frames of 1 month, 3 months, and 1 year. And this is a good example. You can see a stock called Apollo Polo here that made 25% in the 3 months time frame. सो अगर हम बात करें मिड कैप स्टॉक्स की, तो यहाँ पर हमें मिड कैप स्टॉक्स में अगर हम 7 दिन की प्रेडिक्शन देखें, तो 12th ऑफ मई को जो स्टॉक सजेस्ट किए गए थे, वहाँ पर हमें 2% से लेके 28% तक के रिटर्न्स देखने को मिली हैं, जिसमें C8, CCL प्रोडक्ट, उसके बाद इंडो काउंट इंडस्ट्री, KI इंडस्ट्री, आरती ड्रग, इंटेलेक्ट डिजाइन, अपार इंडस्ट्रीज, ये वो शेयर्स हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी आउट परफॉर्म दिखाई और एवरेज 11% की तेजी के साथ हमें ये स्टॉक्स जो हैं वो ऊपर जाते हुए दिखाई दिए। एवरेज की बात करें तो 11% की एवरेज आई है यहाँ पर। वैसे ही अगर हम स्मॉल कैप स्टॉक्स में देखें 14 डेज में, तो हमें 6% से लेके 22% तक की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिली। अगर हम लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करें, जो कि 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम में 27 फेब को
जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलता है। तो लॉन्ग टर्म मतलब 1 महीना 3 महीना है ना, ऐसे अगर हम बात करें तो वहां पर हमें काफी अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। तो 27 फेब को 10 स्टॉक्स जो सजेस्ट किए गए थे, वहां से एपीएल अपोलो से लेके वरुण बेवरेजेस तक की अगर हम बात करें तो 1.9% से लेके 25% तक की तेजी दिखाई दी है, जिसमें एपीएल अपोलो 25% से ज्यादा की तेजी, उसके बाद अडानी ग्रीन 20% की तेजी, टाटा कम्युनिकेशन 20% की तेजी, अडानी इंटरप्राइजेस 19% की तेजी, लिंडे इंडस्ट्री लिंडे इंडिया इसमें आपको 19% की तेजी, सीजी पावर 16% की तेजी, नवीन फ्लोरिंग 11% से ज्यादा की तेजी, और डिक्सन 6% से ज्यादा की तेजी, एसआरएफ 4% से ज्यादा की तेजी, और वरुण बेवरेजेस लगभग 2% की तेजी देखने को मिली है। इस दौर में बीएसई ने भी 9% से ज्यादा की तेजी दिखाई है। और अगर हम आइनो फर्स्ट की बात करें तो लगभग 14.5% के रिटर्न हमें आइनो फर्स्ट के देखने को मिलेंगे। All right, so after seeing the 3 months time frame with highest predictabilities and the 1 year that also we can find here in the Shunya platform, you can get the prediction for the 1 year time frame. This one taken from the 27th of May 2024 up until the 27th of May 2025. And we can see some of the stocks here with high predictability level as the stock JSW Holdings made almost 250% in that year, while the benchmark made 8%, and many others that made 90 and 60% in a period of 1 year. So we suggest you again, give more weight to predictability than the signal, but check both values to get the highest values to get the optimal trading stocks. Keshav, you are muted. सॉरी। सो 1 ईयर के अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें मिड कैप स्टॉक्स के अंदर, तो हमें मिड कैप स्टॉक्स में जो तेजी देखने को मिली है वो 12% से लेकर 250% तक की तेजी दिखाई दी है। जेएसडब्ल्यू होल्डिंग का शेयर 27 में 2024 को सजेस्ट किया गया था, जिसने 249% के रिटर्न दिए हैं। जीआरएससी का स्टॉक था जिसने 92% की रिटर्न दी है। जीटीएनडी का शेयर्स था जो कि 60% से ज्यादा के रिटर्न दिखा रहा है। आईआईएफएस 40% के रिटर्न, सारेगामा इंडस्ट्रीज 16% के रिटर्न। और ऐसे बहुत से शेयर्स जो हैं, आरबीएनएल की हम बात करें तो आरबीएनएल में 12% से ज्यादा की तेजी, कोचिन शिपयार्ड में भी हमें अच्छी तेजी दिखाई दे रही है। सो बीएसई पिछले 1 साल में 8% ऊपर है, और अगर हम आइनो फर्स्ट की एवरेज निकालें तो लगभग 40% की एवरेज हमें आइनो फर्स्ट पर देखने को मिल रहा है मिड कैप स्टॉक्स में 1 ईयर के टाइम फ्रेम में। All right, so how can you actually use this AI technology in the Shunya platform? So we actually eased up and do it for you. We embedded this algorithm in the Shunya platform. As we can see on this screen, this is the home screen of the Shunya platform with the INO first algorithm. We can see in the first ticket that we have the best AI stock picks. As we just saw in the forecast, you have the green cells and red cells, and you can actually choose the best stocks out of the 6 time frames that is located on the top right of the platform of the Shunya screen. And you can choose between large cap, mid cap, and small cap as well. You can actually buy and sell stocks from this specific screen, and you get all the bids and asks that you need to trade the specific stock. And if you point one of the stocks or pointing with the mouse, I mean, or clicking one of the stocks, you can find the signal and the predictability as well here, and the time frame it belongs to.
If you want to see past prediction and past performance of the stocks, you can scroll down by the arrows to the bottom left corner of the screen and see past performance of the algorithm stocks and algorithm predictions. And of course, all this available in the Shunya platform. सो जैसा मैंने आपको बताया पहले भी कि जो स्टॉक्स आपको ग्रीन में दिख रहे हैं, ग्रीन कलर के बॉक्सेस में, ये वो शेयर्स हैं जो अपसाइड जाने का पोटेंशियल रखते हैं। रेड वाले जो स्टॉक्स हैं वो डाउन साइड जाने का पोटेंशियल रखते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी के शेयर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होती हैं, 3 दिन से लेके 1 साल तक की, 3 डेज, 7 डेज, 14 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर। अलग अलग स्लाइड पर जाके आपको नीचे स्लाइड मिल जाती है, स्लाइड्स पर जाकर आप अपने अकॉर्डिंग अपने शेयर्स को और ज़्यादा शेयर्स को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर टॉप में जो दिखाई देंगे आपको वो 10-10 स्टॉक देंगे, टॉप 10 स्टॉक बाय साइड के, टॉप 10 स्टॉक सेल साइड के। बाय साइड डायरेक्टली यहीं से ही हो जाएगा, आपको मार्केट डेप्थ देखने को मिलेगी, हाई लो फर्स्ट देखने को मिलेगा, ओपन हाई लो क्लोज जो भी उस शेयर का डेटा है वो सारा डेटा आपको यहीं से देखने लग जाएगा। आपके पास कितना अवेलेबल फंड है, सारी चीजें आपको इसी पेज पर देखने को मिलेगी। ओवर टू यू मैन। All right. In the next tab, we can see the indices forecast, and by that you can see the trends or the main trend of the market. While you see multiple indices from the Indian market, if it's the NIMI 150, or if it's the mid cap index, if it's the technology index, the Nifty Tech. You have a lot of Indian indices in this tab in which you can switch between NSE and BSE. And again, of course, check your time frames. In the next tab, in the holding tab, you have a really interesting feature. After buying one of the Indian stocks that the algorithm suggested to buy, you'll get your portfolio in list in the holding tab, and you can see the signal and the predictability of each stocks you buy on each and every day, of course, in each and every time frame. So by that, you can follow the stock and know if its signal is getting stronger or weaker, and watch the predictability indicator, and by that monitor your investment throughout all trading day. And again, you can switch between the time frames and see if the stocks is good for hold for a short term period or for a longer term period by clicking of one of the 6 time frame buttons that you have in the top of this screen. सो अब वो तो आपने AI पिक्स देखे जहां पर आपको स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टैब की, वो है इंडाइसेस का टैब, जहां पर आपको कौन से इंडेक्स आने वाले टाइम में अपसाइड या डाउनसाइड का पोटेंशियल दिखा सकते हैं वो देखने को मिलेगा। सो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कोई आईटी इंडेक्स दिखाई दे रहा है आपको, तो आईटी इंडेक्स में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, तो आप ये कर सकते हैं कि आपको AI टैब में जो स्टॉक्स दिख रहे हैं उसमें कौन सा आईटी स्टॉक्स है जिसकी प्रेडिक्शन है। क्योंकि आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं, आपने देखा कि इंडेक्स भी आईटी का आप दिखा रहा है, आईटी के स्टॉक्स भी दिखा रहा है जो ऊपर जा सकते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा प्रेडिक्शन किसकी अच्छी है, सबसे ज़्यादा सिग्नल किसका अच्छा है, ऐसे स्टॉक को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उस स्टॉक को हम बाय करके या जो भी हम मतलब करना चाहें उसमें अपनी पोजीशन क्रिएट करके हम एक पोजीशन क्रिएट उसमें कर सकते हैं। फिर यही अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर शायद दिखा दे कि भाई मेटल सेक्टर जो है वो नीचे जाने वाला है, वहाँ AI पिक्स में आपको दिखा रहा है कि मेटल स्टॉक कोई है वो ऊपर जा सकता है। ओके, नहीं, अब आपको यहाँ पर दिक्कत हो गई कि एक तरफ तो कह रहा ऊपर जाएगा, दूसरी तरफ कह रहा इंडेक्स नीचे जाएगा, तो मैं रिस्क क्यों लूँ? तो एक एनालिसिस तो हमारा वही हो जाता है। अच्छा, जो स्टॉक हमें डिफरेंट टाइम फ्रेम में देखने को मिल रहा है, जो कि 3 दिन में भी है, 7 दिन में भी है, 14 दिन में भी, 1 महीने, 3 महीने, 1 साल, हर जगह अपसाइड दिखा रहा है, ऐसे स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होता है।
आप देखेंगे उसकी प्रेडिक्शंस बढ़ते हुए, जितने टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं उतने बढ़ते हुए टाइम फ्रेम में उसकी प्रेडिक्शंस और उसके सिग्नल दोनों बढ़ रहे होंगे। तो ऐसा कोई स्टॉक आपको देखने को मिलता है जो कि हर एक टाइम फ्रेम में बैठा हुआ है, तो उस स्टॉक के अंदर आपको अपनी पोजीशन, अपनी स्ट्रेटेजी लगा के अपनी पोजीशंस देखनी चाहिए। अगर जगह मिलती है बनाने की तो पोजीशंस वहाँ पे बनानी चाहिए। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट टैब, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, इसके अंदर आती है हमारी होल्डिंग्स, जो शेयर्स हमने खरीद रखे हैं अपने शून्य में, तो वो उस होल्डिंग के जो भी प्रिडिक्टेबिलिटी और सिग्नल है वो दिखाता है। कि जैसे आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भाई ये वाला स्टॉक है जिसके सिग्नल डाउन जा रहे हैं, ये वाला स्टॉक है जिसके सिग्नल अप जा रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। ओवर टू यू मैन। All right, so now our algorithm is available in the desktop and also, of course, in the mobile app of the Shunya platform. So you can use it on the desktop or app as you wish. And another feature that's coming up pretty soon, we can see the derivative trading that we are making ready for you guys. You can trade on the Nifty, on the back potential, and other many indices that will be included in a different package for the future derivatives trading. So this feature is coming up pretty soon. So you gotta stay tuned. Keshe? या यस। सो अब हम बात करते हैं कि ये शून्य पर दिखाई कैसा देता है। सो शून्य डेस्कटॉप पर आपको आइनो फर्स्ट जो है वो beta.shunnya.com पर यूज करने को मिलेगा। आप वहां सर इसको यूज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें ऐप की, तो ऐप में आपको हब में आइनो फर्स्ट IKF का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके थ्रू आप आइनो फर्स्ट को एक्सेस कर सकते हैं। आइनो फर्स्ट जो है वो आपको AI बेस्ड सिग्नल प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से आपको ये जानने में आसानी होती है कि आने वाले टाइम में कौन से शेयर्स हैं जो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड पोटेंशियल्स दिखा सकते हैं। यस, देन नेक्स्ट। सो जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अभी फिलहाल के लिए आपको इंडेक्स में, इंडाइसेस में आपको देखने को मिल जाएंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जिनके ऊपर आप कोई पोजीशन बनाना चाहें तो अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेक्स और मिड कैप निफ्टी, इनके ऊपर आपको प्रोडिक्शंस मिलती हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ा सा अभी ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस वगैरह नहीं सजेस्ट करता है, पर हाँ अगर हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो इन इंडेक्सेस, इंडेक्स में हम अपनी पोजीशंस ढूंढ सकते हैं अगर हमें कोई जगह मिलती है। यस सर, ओवर टू यू। Okay, so all the features that you saw here in this webinar are actually available for you in a special webinar price. You get the daily forecast in the 6 time frames. You get the best stock picks from the Indian market. You get the large cap, the mid cap, and the small cap from the Indian market, and you get the best indices on a daily basis. All of that with the customized AI powered forecast for your holdings is available now in a special price, introduction price of 799 Indian rupee per month. This price is not going to last long. The price is going to be higher. So use this actually webinar sales that we have to purchase this amazing, I think, feature and technology to help you and to identify the best stocks opportunity in the Indian market. This sale is available for the next 24 hours, so please use this sale.
ये लास्ट मंथ वेबिनार सेल है जहां पर आपको 799 पर मंथ की प्राइस पर आई नो फर्स्ट जैसा एक टूल यूज करने को मिलेगा जो कि आपको बताएगा कि कौन से स्टॉक्स आने वाले टाइम में अपसाइड या डाउनसाइड रहने का पोटेंशियल रखते हैं। इसमें आपको मिलेंगे एआई फोरकास्ट रोजाना 6 टाइम फ्रेम में, डेली टॉप स्टॉक पिक्स लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में, इंडाइसेस की फोरकास्ट मिलेगी आपको, और साथ ही एआई पावर्ड फोरकास्ट मिलेगी आपकी होल्डिंग्स के ऊपर। 799 पर मंथ पर ये लास्ट मंथ प्राइस है। अब इसके बाद आपको ये प्राइस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। ये लास्ट हमने 1 महीने के लिए इसको और एक्सटेंड किया हुआ है। तो अगर अभी आप इसको लेते हैं तो बस ये आपको मिल जाएगा 799 पर मंथ की कीमत पर। अदरवाइज आगे इसके प्राइस रिवाइज होने वाले हैं। Yep. So again, all those features that we saw are available now for you guys in a special webinar deal of 799 Indian rupee per month. This is a special introduction price for today only. So use that. You can also get to that screen by scanning the QR code, and you'll get directly to see the best Indian scripts for the next month, days, or weeks. Just scan this code, and you get directly to the website, the Shunya platform. And another thing that we can offer you is our growing WhatsApp group, Indian WhatsApp group. You can get some special offers and articles and interesting forecasts about the Indian market. So scan the QR code and you can join our community of I Know First India. So feel free to do so as well. सो एक हमने ग्रुप कम्युनिटी बनाई हुई है जिसमें आप को हम ऐड कर लेते हैं और आपको टॉप 10 स्क्रिप्ट्स बता देंगे, जो कि अगर आप देखना चाहते हो तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप पर, और वहाँ पर आपको जो भी नेक्स्ट वीक के प्रेडिक्शंस होंगे वो मिल जाएंगे। सो आप उसको इस्तेमाल करके अपनी कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। सो ये स्कैनर है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसको आप स्कैन कर सकते हैं और आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। Okay, so Just a moment let's. before you're continuing, Ben. Yeah, sure. I see some messages regarding how to join and everything. To simplify everything, we place the links to the webinar chat. So just scroll over, open the webinar chat window, or scan the QR code that we have right here. And then you're getting the page where you can subscribe to the service and get today's top picks and the topics also for tomorrow and the next week, basically. Yep. So you can use the chat to subscribe to the service. And after that, I want to talk about how do we use the algorithm as a market intelligence tool. We used it many times to see the bigger picture of the markets. And I want to show you a few examples about the Indian Nifty, the Nifty 50 index. We saw from the end of 2024 in this specific point in the beginning of October that the big drop in the Indian market started, and you would could avoid this drop if we were just getting the information from our indices forecast in the Shunya platform. And you can see that the majority of the Indian indices were located on the red part of the forecast. So the algorithm saw this drop coming, and this is a forecast from October 1st. This is our world indices
forecast, basically, in which we can see more than 175 major indices around the globe. And we located and see and identified that the Indian market, the Indian indices, such as the Nifty PSU and the Nifty 500 and the Nifty 50, was located on the red side of the forecast. And by that, we knew that this drop is coming pretty soon, and we saw it in the shorter time frames of 3 days, 7 days, 14 days, and even 1 month. In that case, in the beginning of that drop, we actually identified that the market is going to go down. Another interesting case of the algorithm actually functioning as a market intelligence tool, we can find in the beginning of 2025, in which we saw a little increase in the market. The market went up in the beginning of the year, and then another drop, and that's also was actually was seen by the algorithm in the forecast from the beginning of the year, from January 1st. We saw the Nifty and the Nifty PSU is actually are located in the red side of the forecast. So although the market did went up in the few first weeks of 2025, the algorithm actually identified this drop and saw that in the first month of the 2025, it's going to be a negative market. And that's a really good intelligence for traders, for investors in the Indian market, because they know how to manage and allocate their portfolio according to these specific examples and to this specific forecast. And the third example that I want to give you is for the upper side. After the market went down at the beginning of 2025, the Indian market was one of the markets that recovered pretty fast in the beginning of April. So in the 7th of April, we started to see the Indian markets going up again. And we also saw it in our forecast. Again, you can see a positive indices of the Indian market. A lot of the indices are located in the green side for the multiple time frame. If it's 3 days, 7 days, 14 days, 1 month, and even 3 months, we saw that the algorithm gave these indices really a positive forecast. And another interesting anecdote is you can actually see, if you guys know the VIX from the US market, we saw that the VIX was in the top of this forecast, which means that volatility is yet to come in those months. And whoever is actually following the US market, you saw that April was one of the most volatile months that we had in the US market. So the algorithm gave us a big perspective of the markets and showing us where to be and what to avoid, actually. And that helped us to know that in the beginning of April, this is from the 7th of April, right? The forecast here that you can see is from the 6th of April. It's the day before that huge surge. So it helped us to understand that the Indian market is going to go back on track, and you can actually benefit from it. Yes. So बात करते हैं निफ्टी इंडेक्स की। तो जब आई नो फर्स्ट ने प्रिडिक्ट किया था कि डाउनफॉल आएगा मार्केट में, तो उस टाइम निफ्टी इस रेड एरो पे प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट में डाउनफॉल आएगा, और वहां से आप देख सकते हैं निफ्टी में कितनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये थी फोरकास्ट 1 अक्टूबर 2024 की। 1 अक्टूबर 2024 को प्रेडिक्शन हुई थी कि मार्केट गिरेगी, और वहां से रिजल्ट्स आपके सामने चार्ट पर।
सेम निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो वहां पर आप देख सकते हैं जो प्रिडिक्शंस हुई, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। वो 1 जनवरी 2025 को भी वर्ल्ड इंडाइसेस फोरकास्ट में फिर से निफ्टी 50 को रेड मार्क किया गया था कि इसमें गिरावट होगी, और वहां से फिर बाजार जो है वो नीचे आ गया। और फिर उसके बाद निफ्टी 50 में जो बाइंग का सिग्नल आया वो आप देख सकते हैं, जो आया वो 7 अप्रैल 2025 को, और उसके बाद मार्केट में कितनी बड़ी तेजी दिखाई दी। 6 अप्रैल को मार्केट में इन्होंने इनोफर्स्ट ने ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि मार्केट अब तेजी का दिखाने वाला है। लास्ट स्लाइड प्लीज बैन। 6 अप्रैल को फोरकास्ट दिया था कि बाजार में तेजी आएगी, और 7 अप्रैल से 6 अप्रैल के बाद 7 अप्रैल के दिन से आप देख सकते हो मार्केट ने क्या तेजी दिखाई है। मतलब एक दिन पहले आपको बोल दिया कि अब बाजार जो है वो तेज होंगे। सो ऐसी प्रिडिक्शंस जो हैं वो एआई आपको करके देता है। Yeah, so all of this you get in our special webinar sale for Shunia platform. You get also the indices, as you can see here, and the market intelligence indices that we saw in those examples can help you focus on long or short directions. And you get all of this in our webinar sales. Again, the 6 time frame, stocks, large stocks, small stocks, mid cap stocks, and even a customized AI a portfolio that you can monitor and watch the stocks that you buy. All of this for $7.99, and it's not going to stay. The price is going to change pretty soon. So use this webinar sales to join in now. You can do so by scanning the QR code that you see on the screen, or using the chat link that we sent you in the chat tab of the Zoom that we are showing you those presentation. So scan the code or click the chat and do so because it's available for just the next 24 hours. सो ये लास्ट मंथ हमारी स्पेशल वेबिनार सेल है, जहां पर आपको सारी फैसिलिटीज जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। सभी तरह के फीचर्स जो आइनो फर्स्ट के हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये लास्ट मंथ ही है। आपको अगर ये लास्ट, आप लास्ट मंथ भी मत बोलिए, लास्ट वेबिनार सेल है। इसके बाद आपको जो है नए प्राइसिंग देखने को मिलेंगे। सो आइनो फर्स्ट पे आप अभी आपको दे रहे हैं एआई फोरकास्ट डेली 6 टाइम फ्रेम में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों ही कैटेगरी के स्टॉक्स पर, इंडाइसेस पर, डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए, और एआई पावर्ड फोरकास्ट मिलेगी आपकी होल्डिंग्स के ऊपर। आप चाहें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपको टॉप 10 स्क्रिप्ट्स बताएंगे नेक्स्ट वीक के लिए, जिनको आप अपनी टेस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं उस फोरकास्ट का। और एआई बेस्ड से रिलेटेड, जो भी एआई से रिलेटेड अपडेट्स होंगी वो आपको इस ग्रुप में भी देखने को मिल जाएगी। All right. So we also the algorithm also generates forecasts for the US stocks, as we can see here. I don't know if you're familiar with those stock, but they are really popular in the US. Stocks such as MSTR that actually holds a lot of Bitcoin. I think it's the company that holds the most Bitcoins in the world. We have Hood, which actually could go on Friday, get into the S&P 500 index. We have the technology stocks IMTU, or financial stocks such as COF, and of course CVNA, Kavarna. And we can see the algorithm with the prediction of 14 days that we gave in 29th of April. And those were the results for those 2 weeks. You can see also the average
it was around 50%, while the S&P just made the 6.5. This is an interesting forecast for 2 Again, we weeks can see time. the importance of the predictability, Ben. The most predictable stocks, IESC, with predictability of 0.42, made or generated 37 return in just 14 days. And again, it doesn't matter which market we are choosing, whether it's the Indian market or the US market, the same rules are relevant also here. Always focus on the most predictable assets in order to take advantage of the AI power. Yeah, exactly. And also in Hood, which has a high predictability, also performed pretty well with 27% in 2 weeks. So keep an eye on the predictability factor indicator and the signal as well. And we can see it again in the 1 month time frame. Here again, we can see signals and predictabilities for different stocks. This is small stocks in the US. And we can see the average return was 37%. The S&P made 10% in just 1 month, 21 of April until 21 of May. And we can see some stocks such as RGLS, pharma stock, that made almost 300% in 1 month, which is quite incredible for this time frame. So I saw some questions about stocks that doesn't move in the right direction, and that's also happening. It's not all 100% success. We have some failures. Some of the stocks does not go in the right direction. But as you can see, the majority of the stocks are usually heading in the right direction and outperform the benchmark. In this case, it was the S&P. So of course, it's not 100%. The market is volatile and dynamic. So it could not be 100%, but we are trying to do to be on the right side of the map in the majority of the stocks. So please take that as well as a notice. And another interesting package that we have is the BAS package, which holds the most interesting and most talked about stocks in the social media or the digital marketing. We can see a lot of we can see the stocks here, such as Palantir and Netflix, that were mentioned a lot in the social media, and we have a special package on those specific stocks, which also contain the forecast on the Bitcoin itself. So you can try those package as well. But just for the clarification, the price of these packages are more than, I think, 20 or 30 times the price of you can get it in the Shunya platform in this webinar sale. So please choose wisely. And again, we have other kinds of packages. If it's a commodity package that we have, that you can actually purchase from the Iron First website. अगर हम बात करें आइनो फर्स्ट के, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको इंडियन मार्केट्स में प्रोडिक्शंस देता है, साथ ही साथ आपको डिफरेंट ओवरसीज मार्केट में प्रोडिक्शंस देता है. सो अगर यूएस स्टॉक्स की बात करें तो यूएस में आप देख सकते हैं सिर्फ इंडियन मार्केट में ही आउट परफॉर्म नहीं करता है, यूएस में भी आउट परफॉर्म करता है. आपको S&P 500 की जो फोरकास्ट था 29 अप्रैल को 14 डेज का, S&P ने 6.5% के रिटर्न दिए और आइनो फर्स्ट ने लास्ट स्लाइड प्लीज डन. आइनो फर्स्ट ने 15% से ज्यादा के रिटर्न दिए. तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा गैप है, आपको डबल से ज्यादा रिटर्न मिलती है आइनो फर्स्ट में. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं एक मंथ के टाइम फ्रेम में 21 अप्रैल से 21 मई तक की अगर हम बात करें, S&P 500 में आपको 10% के रिटर्न मिले और आइनो फर्स्ट ने 37% के रिटर्न दिए, लगभग 4 गुना ज्यादा.
उसके बाद अगर हम बात करें 7 डेज की, तो S&P 500 के रिजल्ट्स जो थे वो लगभग 4.5%, और आयनो फर्स्ट की एवरेज 11.5% की। तो ऐसे आपको हर जगह एआई का बर्स्ट पैकेज जो है उसके अंदर आपको मिल जाते हैं, यूएस स्टॉक्स मिल जाते हैं, और आइनो फर्स्ट की परफॉर्मेंस सिर्फ इंडियन मार्केट्स में ही नहीं, ओवरसीज मार्केट में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो यू मैम। सो 14 डेज 24 अप्रैल को यहाँ पर भी आपको जो परफॉर्मेंस देखने को मिली वो लगभग डबल, 5% के रिटर्न S&P 500 में, और 11% के रिटर्न जो है वो आइनो फर्स्ट की एवरेज। ऐसे ही 1 मंथ की प्रोडिक्शंस, सो आइनो फर्स्ट की एवरेज 9% से ज्यादा की। Okay, and लास्ट मिनट। again, this is the last chance to get this interesting webinar sale that we offer you for small caps, mid caps, and large cap, and the indices. Whoever traded derivatives trading, and to get the customized AI portfolio that you can monitor your holdings, all that in 799 rupee per month. And before we go on talk about what the algorithm thinks about what's going to happen in the Indian market next month, I want to actually talk to you what happened in the last webinar. In the last webinar that occurred in April, we showed you the indices forecast for the last month, and we can see the result here to the right. If it's the Nifty Yali, Nifty Alpha 50 made almost 14%, as well as the Nifty Mid Cap 150 that moved by almost 10%. The Nifty Small Cap 250 that was located here also made 13%. The PSU and Nifty PSU made 13% and almost 14%. So this forecast that we gave you last month was really successful. And now we're going to see what the algorithm thinks about the next month. So webinar sale, last month sale of this price 799। आइनो फर्स्ट आप यूज कर सकते हैं beta.shunya.com पर जाके, और आपको इस 799 में सभी फीचर्स आइनो फर्स्ट के आपको यूज करने को मिल जाएंगे, एक्सेसिबल होंगे शून्य प्लेटफॉर्म पर। और इस प्राइस में आइनो फर्स्ट आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ये सबसे कम प्राइस है, कम प्राइस भी नहीं है, इतना कम प्राइस है जो आप सोच भी नहीं सकते। Yes, then over to you. All right, and again, before we're going to see the next month indices, please feel free to join our WhatsApp group by scanning the QR code and being part of our growing community from the Indian market. In this WhatsApp group, you can see forecast of the Indian market. You can get some AI articles and be with us in our growing community. Ben, I'm scanning right now. Hold on. Okay. All right. Thank you, Ben. All right, so let's see what the algorithm thinks about next month. And we can see the algorithm gives a pretty green forecast for the Indian market. We can see the Nifty Small Cap 100 here, located on the top, and the Mid Cap 50 also in the top of the table. We can see the Nifty Alpha 50, which is Nifty Yali here, also has a strong signal and is located on the top of the forecast, and many other
nifty indices such as the PSU, the financial one, the energy, nifty, the mid-cap 100. But the majority of the indices are painted green, and it seems that the next month for the Indian market is going to be green, focusing on again the Nifty Alpha 50, the Nifty small cap, mid cap, and the indices that you see here. The financial sector and the energy sector looks quite interesting as well. Over to you, Keshav. Yeah. So I know first का एक आप लोगों के लिए इट्स प्रेजेंट एक तोहफा कि क्या रहेगा फोरकास्ट आने वाले एक महीने का. सो एज पर आई नो फर्स्ट आज की बात अगर हम करें तो आज के लिए तो ये कह रहे हैं कि अगले एक महीने में मार्केट में हरियाली ही रहने वाली है. तो अलग अलग सेक्टर्स के इंडाइसेस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं. इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रेडिक्टिबिलिटी में स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है वो दे रहा है निफ्टी मिड कैप 50 और निफ्टी स्मॉल कैप 100. तो निफ्टी मिड कैप को हम ट्रेड कर सकते हैं. 0.44 की प्रेडिक्टिबिलिटी है इसकी, और निफ्टी 50 भी जो है वो 0.51 की प्रेडिक्टिबिलिटी के साथ हमें दिखाई दे रहा है. तो ये वो हैं जिन्हें हम ट्रेड कर पाएंगे, और इनका कहना है हमारे एआई का कि मार्केट अप ट्रेंड दिखा सकता है. तो हमें बस अपनी रिसर्च लगानी है. अगर हमें भी लगता है कि मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा देन हम अपनी पोजीशंस उस हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं. सो इट्स प्रेजेंट. All right, so let's answer some questions because I see there's a lot of questions waiting for us in the Q&A section. Yeah, in Q&A there are lots of questions. तो अभी हम क्वेश्चन आंसर्स, आपके जो क्वेश्चंस आए हैं उनके आंसर्स करेंगे. सो सॉरी आपको काफ़ी वेट करना पड़ा अपने क्वेश्चंस का इंतज़ार करने के लिए. विल रिप्लाई आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे. Over to you, Yaron sir and Ben, please. Yeah. So the first question that I see, how often is it being updated in the platform, and when we are receiving the stock picks, is it before the trading day or during the trading day? So basically on a daily basis, the AI algorithm is learning the Indian market for you, identifying opportunities, and you are receiving those opportunities before the trading day. So all you need to do before the trading day, you need to log into the platform to receive the fresh forecast with the best opportunities, and you will receive the most updated forecast from the NSE, from the BSE, with the best opportunities, basically. Okay. There is a question regarding the signals and predictability. I think Ben explained the meaning of those indicators. In a nutshell, the signal is representing the movement of the specific asset. It could be positive movement or negative movement, as Ben described. And the second indicator is the predictability. You can see it in the bottom. This is the most important indicator. It varies between -1 and 1. And this gives us the confidence level of each forecast. And it's a super important indicator that helping you to identify not only the best opportunities, but also the most predictable opportunities from the Indian markets. People are asking us what are the best opportunities for today, best scripts for today. In order to get the best scripts for today, just use the link that is available in the chat. I just pasted it. So just use that and then log in again to the platform, and you will see the best opportunities for today.
Can AI comment on trader selected stock? Yes, if you have those stocks in your portfolio, you can get a customized forecast for your own holdings on a daily basis. Ben? They're asking, can you hear me? Yeah, yes, we can. I see some question about stop loss. Stop loss is up to you guys. We deliver the best opportunities for different time frames, but the stop loss and is needed to be handled by you. So you can decide where to put the stop loss and manage your risk. And if the algorithm gives you a forecast for 2 weeks, for example, it's expected that the stock will go up in those 2 weeks. Okay, multiple people are saying that they have subscribed and they're wondering how they can get the screen. So if you subscribe, just log in again to the system and then you will see the best opportunities in your account, basically, right, Kashev? Yeah, yes, your answer. Actually, some questions which are related to Shunya will address them separately. I have taken some screenshots of them. All right, I think we answered the majority of the questions. And unless you see something that I missed. There are a lot of compliments to you, Ben. Several people are asking how they can get the opportunity, so we already said. If you have any payment problem, please contact Shunya support team, right, Kashev? Yeah. If you अगर आपको किसी भी तरह की पेमेंट प्रॉब्लम है, if you have any issue related to payment, you can directly write us to our email, or you can connect through our customer support. They will guided you. They will if there is any extra cost payment only. Okay. Well, I don't think so. There is any kind of issue with the payment modes. Okay. Yeah. Okay, I see a lot of people that raising their hand still. This is your last chance to ask question. Please use the chat, and then we will be able to address those questions. So, wait, please. इस यहाँ पे विशाल राणा जी आप पूछ रहे हैं कि कैसे ज्वाइन करना है beta.शून्य.com। यहाँ पर चैट में हमने लिंक डाला हुआ है, वहां सर आप जा सकते हैं beta.शून्य.com पर, और उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको आई नो फर्स्ट दिखाई देगा, वहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं। Yes, sorry to interrupt you, Yaron sir. Actually, No problem, no problem. I have a question. Why in English it's always shorter? Sorry? In English it's always shorter. Yeah. In English it's always shorter, but in Hindi we need to describe fully. Yeah, no problem. No, I'm kidding. I'm learning from each webinar. I'm learning more and more words, scripts. I mean, Juki, I already know, but I'm trying to learn more. Yeah. So one most common is namaste. Namaste to everyone. Namaste, namaste, I know. Namaste. Yes. Namaste, I know. Yeah. Okay. Let's see. There are questions regarding how to use it for the Forex market and also the crypto market. Okay, the Forex market is actually something that we have in our pipeline in the platform. So in the upcoming month, you will be able to get it as well.
Yeah, any additional questions, Ben? No, I think we got the most of them. And if you have any question, or you can of course send your question to the Shunya supporting platform, and they will of course give you your answers. And I want to say thank you for joining us for this webinar, and thank you very much, Keshav, for translating with a lot of patience. And thank you, Yaron. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल द जॉइनीज जिन्होंने इस वेबिनार को सुना। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एआई आपकी हेल्प करेगा। आप सर्विसेज यूज़ करके देखें, आपको ज़रूर ही पसंद आएंगी और आपका काम बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है इस एआई की मदद से, क्योंकि आप भी जानते हैं आजकल हर कोई एआई की बात कर रहा है, तो फिर स्टॉक मार्केट इस जर्नी में पीछे कैसे रह सकता था। फाइनेंशियल मार्केट में अब एआई की एंट्री हो चुकी है विद आई नो फर्स्ट। So, thank you, Yaman sir. Thank you, Ben, for this wonderful webinar and for this wonderful product too. Yes. Thank you, Keshav. Okay. And again, thank you for the support and for the good translation. And we appreciate your hard work. My Thank you pleasure, very sir. much. Thank you. Thank you. Okay. Bye Have a bye. good Thank you. bye bye, guys. Yes.